बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दी अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपके लिए एक नया एपिसोड हम लेके आए हैं। आज की जो वीडियो है वो उसमें हम इनको टर्म्स को हम कवर करेंगे और आप सब दोस्तों को पता भी होगा कि इनको टर्म्स है क्या चीज़ और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टेज पे जो है इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले जो है हम इनको टर्म्स को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि इनको टर्म्स क्या चीज़ है। तो इनकोटर्म्स जो है ये एक एक्रोनिम है, इंटरनेशनल कॉमर्स टर्म्स को डिफाइन करता है और सिंपली उसको हम इनकोटर्म्स बोलते हैं। यूजुअली जो इनकोटर्म्स है वो पब्लिश होती है आपका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, वो पब्लिश करता है और एवरी 10 ईयर्स बाद जाके इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। सबसे लेटेस्ट जो इनको टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम वो 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल है और इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो ICC की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा और इसको इनको टर्म्स 2020 से हम पुकारते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ इनको टर्म्स है हमारे पास है इस पर इनको टर्म्स 2020 वो 11 है और आगे जाके हम उस पर बात करेंगे कि वो 11 कौन से इनको टर्म्स हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इनको टर्म्स जब भी आप इंपोर्ट करते हैं, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये इनको टर्म्स ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं और आपके जो बायर हैं और आपके जो सेलर्स हैं, क्योंकि उनकी उनके बीच कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा थ्रू परफॉर्मा इनवाइस एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट, वहाँ पे इनको टर्म्स जो है लाजमी फिक्स की जाती हैं और वही इनको टर्म्स पे डिटरमिन करती है कि फ्रीट की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, इस तरह लोडिंग अनलोडिंग टर्मिनल कॉस्ट और मुख्तलिफ सारी जितनी भी चीज़ें हैं इंटरनेशनल ट्रेड में जो आप आगे जाके देखेंगे, तो वो कौन डिटरमिन करेगा और वो पे कौन करेगा, उसकी राइट्स, किसकी राइट्स होंगी, किसकी ऑब्लिगेशंस होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपकी हर इनको टर्म जो है वो अलग अलग से इसको डिफाइन करता है। और इंटरनेशनली जो है ये रिकोगनाइज प्रैक्टिस है और बाय लॉ जो है ये इन्फोर्सिबल भी है। तो जितने भी हमारे दोस्त इंपोर्ट में अगर काम कर रहे हैं या एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो उनको जो है वो इनको टर्म्स का बड़ा क्रिटिकल जो है वो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है जब आप इनको टर्म्स जो है वो डिसाइड करते हैं। एक इनको टर्म दूसरे इनको टर्म से बड़ी एक में बड़ा थिन लाइन होता है जो आप उसमें आप डिसाइड कर रहे होते हैं। और इस टाइम जो है हमारे पास चूँकि 11 इनको टर्म्स है, उसमें सबसे पहले जो है आपका एक्स वर्क्स है जिसको EXW भी कहते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जहाँ पे बायर जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सेलर की जो है वो फैक्ट्री तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जैसे ही फैक्ट्री से गाड़ी अनलोड होती है या लोड होती है वहाँ से जो है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जो हम अगर एक्स वर्क से हम आगे चलेंगे, फ्री कैरियर, इस तरह फ्री अलॉन्ग साइड शिप, यहाँ पे जो है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और आपके जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर की वो होती है एक्स वर्क्स में और सबसे कम जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिलीवरी ड्यूटी अनपेड में है। सिमिलरली अगर हम सेलर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेलर जो कवर्ड होता है वो एक्स वर्क्स में कवर होता है और आपके पास जो जो ज़्यादा वो रिस्क बेयर करता है वो डिलीवर ड्यूटी अनपेड अनपेड तक जो है वो उसकी रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता। तो आगे मैं आपको वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जो कि ICC की जो है वो उनकी ओनरशिप है और वो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है क्लियर हो जाएंगी ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड ऑन द पार्ट ऑफ सेलर। जहाँ तक बात है चेंजेस की, तो पिछले जो इनको टर्म्स आए थे 2010 में, उसके बाद जो मेजर चेंज आई है वो सिर्फ यही है कि आपके पास जो डिलीवर्ड डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड था इसकी एडिशन हुई है और इसने रिप्लेस किया है DAT को, जो कि पहले डिलीवरी एट टर्मिनल था। तो वो चीज़ जो है अब जाके वो इसने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो उसमें भी कोई मेजर कोई चेंज नहीं है, ये भी डिलीवर्ड एट प्लेस ही है DAP, लेकिन इसके साथ ये है कि वो अनलोडेड होता है। जो लोडिंग की या अनलोडिंग की जो कॉस्ट होगी वो आपका बायर ही बेयर करेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आप जो है वो वीडियो देखिएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। Understanding Incoterms is a vital part of international trade. When exporting products internationally, you must agree to sell your goods based on 11 Incoterms.
Incoterms is short for International Commercial Terms, which are published by the International Chamber of Commerce and relate to international commercial law. They are accepted by governments and legal authorities around the world. The International Chamber of Commerce have published the latest version of Incoterms, Incoterms 2020, which have come into effect on the 1st of January 2020. Put simply, Incoterms are the selling terms that the buyer and seller of goods both agree to for the international sale and supply of goods. Incoterms clearly state which tasks, costs, and risks are associated with the buyer and which are associated with the seller. The Incoterm states when the seller's costs and risks are transferred onto the buyer. This chart displays Incoterms 2020 in an easy-to-understand format. Note, this chart should be used as a guide only. For a full and complete description, you should refer to the full version of Incoterms published by the ICC. The blue section displays the different types of Incoterms beginning from left to right. The green section shows the groups, any mode or modes of transport, and sea and inland waterway transport. The yellow section shows the freight collect terms and the freight prepaid terms. Starting from the left side is the exporter or the seller of the goods, beginning at the seller's location or warehouse. As you move along to the right, the products leave the warehouse, get loaded on board a vessel or aircraft at the port of loading, get shipped through to the port of destination, pass through customs at the arriving country, and then get delivered further through to the buyer's location. Along the way, there are set Incoterms to establish which risks and costs are agreed to be paid by the seller and which are to be transferred to the buyer. The left side of the chart displays the different obligations and charges, and displays which are covered by the seller and which are covered by the buyer. So starting from the left is the first Incoterm EXW, which means X Works or X Warehouse. If the buyer and seller agree to sell goods on X Works terms, then the seller's obligations are simple. The seller will only cover the cost of the goods and the export packaging X Warehouse. So the seller will manufacture the goods and have them packaged and ready for collection from their warehouse. From then on, all additional costs and risks involved in transport away from the warehouse is covered by the buyer. Moving further along the supply chain, there are FCA, FAS, and FOB Incoterms. Under FCA, free to carrier, the seller will cover export duties, taxes, and customs clearance to get the products prepared for export. Under FAS, free alongside ship, the seller will cover the origin, terminal, port handling charges. Then it moves on to FOB, free on board. FOB is generally the most popular Incoterm that is used for containerized trade. When FOB terms are agreed upon, the seller's obligation is to supply the goods and also to pay for all of the additional charges involved to get the goods actually loaded on board the vessel for export. That means the seller will cover all previously mentioned charges and pay for the loading charges to get the goods loaded on board the vessel for export. As soon as the goods are loaded on board, all further associated costs and risks are transferred onto the buyer. The buyer will pay for the international freight and all charges thereafter. If the seller agrees to pay for the cost of freight and carriage, then they can choose to sell the goods on CFR, CIF, CPT, or CIP Incoterms. Note that CFR and CIF are similar Incoterms that cover sea and inland waterway transport. If the seller agrees to cover the cost of insurance during international sea freight, then they can sell on the CIF Incoterm. CPT and CIP are similar Incoterms that relate to any mode or modes of transport, where the seller will agree to pay for the destination terminal, port handling charges. If the seller agrees to cover the cost of insurance during transport, they can sell goods under the CIP Incoterm. Moving further along, DAP, DPU, and DDP are Incoterms involved with getting goods delivered, unloaded, and customs cleared at the country of destination. Under DAP, delivered at place, the seller will cover the costs of delivery to destination. If DPU, delivered at place unloaded, is agreed, then the seller will also pay for the unloading costs at the destination. Finally, if DDP, delivered duty paid, is agreed, then the seller will also pay for the import duties,
taxes, and customs clearance at the country of destination. If you have any detailed questions relating to Incoterms, you should refer to your freight forwarder, the International Chamber of Commerce, or other professional advice. Before products can be shipped internationally, the buyer and seller must agree on the Incoterm that the goods are sold under. The Incoterm must be clearly stated in sales contracts and countersigned by both parties to avoid any misunderstandings. Should any disputes arise, then the details included in the documentation will be referred to. IncoDocs is documentation software used by importers and exporters all over the world. It allows importers and exporters to connect to easily create all of the sales and shipping documentation required for global trade. Join the future of global trade. Try it yourself at incodocs.com.